क्या हाल है दोस्तों, दोस्तकास्ट के एक नए एपिसोड पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनम्र कसाना। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम तो हर ट्यूसडे एंड फ्राइडे 12 बजे एपिसोड निकालते हैं। इफ यू आर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट ऑन एन ऑडियो प्लेटफॉर्म, मेक श्योर यू गिव अस 5 स्टार्स बिकॉज़ वी आर द बेस्ट इन भारत बेबी। आज का पॉडकास्ट है ईश्वराज सिंह भाटिया के साथ, जो सिम्बा बियर को रन करते हैं। ये एक ऐसी कंपनी है जिनकी बियर ताबड़तोड़ तो है ही, साथ ही साथ इनको हिप हॉप का बड़ा शौक है। एज यू प्रॉब्ली सीन द सीधे मौत एक्स Simba collabs a bunch of times यहाँ वहाँ, ये वाला सीन है। बढ़िया लेवल की बियर। इनफैक्ट वी हैड अ बियर ऑन द पॉड इटसेल्फ एंड ईश्वराज टॉक्ड अबाउट ऑल थिंग्स एल्को बेव इंडस्ट्री के अंदर बियर का क्या स्टेटस है, क्या क्राफ्ट बियर्स इंडिया के अंदर रहेंगे। ये वो नर्डी कॉन्वर्सेशंस हैं जो अब स्टेबल बन गई हैं दोस्तकास्ट की। एज यू ऑब्वियसली नो, आई लाइक माई स्पिरिट्स, आई लाइक माई soft alcohols. One of them is beer. The super educative, fun episode with Ishwaraj Singh Bhatia of Simba begins in 3, 2, 1. Anyway, bro, welcome to Dostcast. Thank you for making it all the way to Faridabad from Aero City. बहुत लंबा सफर होगा, I'm sure. Yeah, right. Yeah, but I am super fascinated by Simba. I first discovered it when I saw the Seedhe Maut collab way back in the day, and we're here. Yeah. Cheers. Cheers, man. Cheers. Yeah. Cheers. So, couple of questions. जैसे अभी जिन वगैरह बहुत पॉपुलर हो रही है, पीपल आर गोइंग गागा ओवर जिन, है ना, और क्राफ्ट ब्रूरीज वाली जो सीन है, इट्स ऑलवेज बीन अ नीश। Yes, it has. एंड इज इट स्टिल अ नीश और डू यू थिंक दिस मार्केट इज ग्रोइंग एट ऑल? क्योंकि आज भी लोग अपने प्रिफर्ड जो ट्राइड एंड टेस्टेड एफएमसीजी बड़े वाले ब्रांड्स हैं उन्हीं को लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बेस्ड ऑन माई ओन सो स्मॉल सैम्पल साइज। To be honest, normally क्या होता है कि people tend to get sidelined by कि यार ट्रेंड क्या चल रहा है आज की डेट में. फॉर एग्जाम्पल wheat has this big trend going on right now, but at the same time you have to, as a business you have to be very particular about कि you have different products जो आपको साथ ही साथ who gives you volume. Wheat is मतलब प्रीमियम सेगमेंट में wheat is gaining a lot of percentage nowadays, but still lagers are much forward the comparatively इनसे wheat और stout से. फर्क क्या होता है इनके अंदर? मैं तो बिल्कुल amateur हूँ। wheat क्या होता है, lager क्या होता है, stout क्या होता है? So wheat is थोड़ा सा mic if you can get closer to your face. हाँ. Yeah, wheat is a style of beer. If you say, for example, how single malts, how whiskeys are, right, different blended scotch and everything. Wheat is a style of beer which is used which is made by wheat, right? So normally, आपको stout अगर आप लोगे तो stout is made with oat, coffee and oat, right? तो वैसी wheat is made by wheat flakes and everything, which is imported from outside. And lagers is purely made with two row malts, rice and everything. So it depends कि आप कौन सी टाइप की बियर बना रहे हो. तो मतलब हाउ डू पीपल अक्वायर टेस्ट कि यार मेरे को लागर पीनी है, मेरे को स्टाउट पीनी है? डज दैट कम फ्रॉम जस्ट सैम्पलिंग बियर्स? या आई थिंक सैम्पलिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग विद बियर्स विच आई थिंक कोविड में काफ़ी लोगों ने किया है. हाँ, मतलब लोगों ने बैठ के, मतलब बॉम्बे और बैंगलोर में कंपेरेटिवली जहाँ पे अलाउड था कि पीपल कैन जस्ट गेट इट एट होम, तो वहाँ पे लोग हैव एक्सपेरिमेंटेड सो मच इवन विद स्टाउट्स एंड वीट्स, इवन विद अदर ब्रांड जो होम ग्रोन ब्रांड्स हैं. तो देव गॉट अ ह्यूज सपोर्ट ऑल्सो फ्रॉम द एक्साइज इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, बट इन अदर स्टेट दे डिडंट गेट इट. बट या इट्स मोर ऑफ सैम्पलिंग कितनी होती है. राइट. मैंने एक चीज़ नोटिस करी. आई वॉज रिसेंटली इन बॉम्बे फॉर फ्यू पॉडकास्ट एंड मैं वहाँ पे ऑब्वियसली ठेकों पे गया और मैंने जाके बात करी. सो द एवरेज price for anything compared to Delhi was 2x, right? Yeah. मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब is this because like you must have an idea of it because you deal with state authorities. Why do some states have more expensive alcohol and others have like cheaper alcohol? So it's all about excise policies. Like अब हर state का यहाँ पे in India every state has a different policy. So that is why like in India, अगर मेरे को यहाँ से ऑस्ट्रेलिया माल भेजना है या कहीं कोई भी दूसरी कंट्री माल भेजना, that is much more easier. It's cheaper? No, easier, not cheaper, easier. But अगर मेरे को अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में माल भेजना है, that is more tough for me. But क्योंकि जितनी एक्साइज रूल्स और पॉलिसीज़ हैं यहाँ पे इंडिया में, मतलब वो बिकॉज अल्कोहल हैज़ दैट थिंग ना कि मतलब थोड़ा सा कि इंडिया में टैबू है इस चीज़ का कि अल्कोहल, तो लोग उस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंपेरेटिवली स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं एक्साइज में. तो दे मेक श्योर कि एवरी रूल्स एंड एवरी थिंग इज़ फॉलोड, एवरी पेपर्स आर देयर, एवरी थिंग इज़ देयर. सो दैट टेक्स टाइम. The process takes time. So because of that, the excise policies are very strict. Right. So for example, अब हम excise policies की बात करें. Thank God that you're here because मैंने बचपन से जब से whenever I've started drinking, right?
I've noticed for sale in Haryana only, for sale in Goa only, ये लिखा होता है. Yeah. अब भाई जिस बंदे ने मार्केटिंग करी है बॉटल की बोलेगा यार तुम मेरा एस्थेटिक खराब कर रहे हो. Yeah, I think that is only in Haryana. This is only Haryana. Only in Haryana, but जैसे गोवा और इधर के लिए वो पीछे लिखा रहता है बैक ऑफ द लेबल. फॉर हरियाणा इट इज लाइक ऑन द फ्रंट. Why do you think ये क्यों होता है? For example, if this beer is found in Delhi, if I take this beer to Delhi. See, I think हरियाणा का ये करने का कारण ये है because हरियाणा and Delhi borders are very close. Right. And it's like an open border, right? So people to also मतलब catch the people who are doing illegal stuff. So they have to do bootlegging. Yes. तो क्या है इसका बहुत मतलब एकदम प्रोमिनेंट होना चाहिए हरियाणा और उसके लिए दिल्ली के लिए. नहीं तो हरियाणा वुडंट डू समथिंग लाइक दैट, हरियाणा एक्साइज. बट द रीज़न दे डिड इट बिकॉज क्योंकि दिल्ली बॉर्डर और हरियाणा बॉर्डर आर वेरी क्लोज बाय एंड दे नो कि मतलब बहुत ज़्यादा इलीगल माल और इधर सब इधर जाता है. तो दैट इज़ वाई दे हैड टू. आई थिंक दैट्स व्हाट आई फील. बट ऐसा ही होगा. बाकी नहीं तो पीछे बाकी अगर आप देखोगे तो मोस्टली नीचे लिखा रहता है 4.5% अल्कोहल है, उसके नीचे लिखा रहेगा. राइट. This brings up a couple of questions. जैसे you guys have two policies. One, you do heavy digital marketing. Yeah. Second, ऐसा होता है. I spoke to Anish Pasin from Swami Drinks, right? And great guy though. Yeah, he's fantastic. He's one of the most knowledgeable people in our in everything. Knowledge about everything. Yeah, like even when we discuss anything, I have to think twice because he's like, okay, you can do this and that. Yeah. So. He's very smart. Yeah. So we talked about कि ऑनलाइन एक्टिवेशन वगैरह सही है, बट इट रियली डिपेंड्स ऑन हाउ यू शेल्फ योर अल्कोहल. लाइक शेल्फिंग एंड लिकर स्टोर से इवेंट से पार्टनरशिप करना, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. दैट इज आई थिंक वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स. अगेन इट कम्स डाउन टू द एक्साइज पॉलिसीज. नॉर्मली क्या होता है फिर पहले अभी जैसे दिल्ली में लॉट ऑफ चेंजेस हैव बीन हैपनिंग. ठेके नहीं आया ना, कुछ क्या हुआ? ठेके नहीं आया, अभी गवर्नमेंट ने वापस ले लिया. प्राइवेट गवर्नमेंट ने पूरा ले लिया टेक ओवर. सो इट्स गवर्नमेंट रन लिकर शॉप्स नाउ. सो आई थिंक अब लाइक वैसे अगर दूसरे स्टेट्स में भी ये चीज़ नई शुरू हो चुकी है कि हर स्टेट में गवर्नमेंट हैज़ टेकन ओवर द होल थिंग. गवर्नमेंट इज बिकॉज रेवेन्यू बहुत है. तो एक्साइज रेवेन्यूज़ बहुत होते हैं गवर्नमेंट के लिए. एंड टू बी ऑनेस्ट 50 to 60% रेवेन्यूज जो हैं एक्साइज से ही आता है गवर्नमेंट का. राइट. एंड अल्कोहल इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रेवेन्यू जनरेटर फॉर देम. तो व्हाट वाज योर क्वेश्चन? सॉरी, आई वाज आस्किंग कि मतलब टिपिकली हम शेल्फिंग पे, ऑफलाइन इवेंट्स, इन चीज़ों पे क्यों फोकस करते हैं? अगर हमारी बियर या हमारी कोई भी अल्कोहल बेवरेज ऑनलाइन दिख रही है. आई थिंक as we discussed before, sampling is important, right? तो it has to be a brand perception क्या है आपका आज की डेट में. For example, homegrown brands like us, अगर हम लोग मार्केट में नहीं आएंगे, इवेंट्स में नहीं आएंगे, so how we won't be able to compete with the bigger brands in the market, right? And at the same time, we want to show our quality to the beer market because जितने भी multinational companies हैं, आप international brands ले लीजिए, आज उनकी क्वालिटी और हमारी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है. आई वोंट से मतलब आप 19-20 का फ़र्क बोलोगे, हो सकता है उन लोग भी 19 हो सकते हैं, हम भी 19 हो सकते हैं. आज कोरोना इंडिया में बनना शुरू हो गई है, होगार्डन इंडिया में बन रही है. आप जो कोरोना होगार्डन पी रहे हो, लाइक ब्रांड्स लाइक दीज मेड इन इंडिया ना. इससे पहले दे वर मेड अब्रॉड एंड शिप्ड टू अस. यस, दैट्स व्हाई 380 की बॉटल होती थी टाइम पे कोरोना. यस. अब वो इंडिया में बन रही है, महाराष्ट्र में बन रही है. सो इफ़ यू कंपेयर द क्वालिटी एंड एवरीथिंग, यू वोंट फाइंड अ लॉट ऑफ डिफरेंस. मैं आपको आज की डेट में मैं सारी लागत रख देता हूँ मार्केट की. आप मेरे को बता दो कौन सी है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. हो ही नहीं सकता. आप सारी लागत रख दो मार्केट में, आप बता ही नहीं पाओगे अनटिल अनलेस यू हैव अ वीट बियर. वीट में क्या है, आपके जितने भी फ्लेवर्स है वो बहुत डिफरेंट है. कई लोग के विच इज़ ऑन अ स्वीटर साइड, कई लोग का ऑन अ बिटर साइड. तो स्टिल यू कैन फाइंड आउट, बट अब लागर्स को नहीं पता लगा पाओगे. एंड अभी तक जितनी मार्केट में आ रही थी सारे लागर्स और स्ट्रॉन्ग्स ही थे. तो कोई आप पता नहीं लगा सर. दैट इज़ वाई वन ऑफ द रीजन वाई वी डू इवेंट्स जहाँ पे हम लोग पीपल कैन सैम्पल इट एंड पीपल कैन अंडरस्टैंड द क्वालिटी विच वी आर प्रोवाइडिंग. फिर भी बियर की मार्केट इतनी बड़ी नहीं है. आई वाज रीडिंग वन ऑफ द आर्टिकल्स ऑनलाइन. इट्स ओनली 18 to 20% ऑफ द कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल. यस. एंड दूसरी कंट्रीज में कंपेरेटिवली इज 60% बियर. या मतलब मैं यूके गया था, ओनली बियर्स आर द प्राइमरी. मतलब आपको पता लग जाता है जब कोई हार्ड लिकर पी रहा होता है, बिकॉज इट स्ट्राइक्स आउट. या डेफिनेटली. एंड आप मानोगे नहीं, मतलब आई थिंक यूके यूरोप में 60% बियर्स एंड 40% इज विस्कीज एंड वॉडकाज एंड ऑल ऑफ दैट. इंडिया में इट्स 80% विस्की. एंड इंडिया इज़ द हाइएस्ट सेलर ऑफ विस्की इन द वर्ल्ड. मतलब कहीं नहीं, ऑफिसर चॉइस द हाइएस्ट सेलिंग विस्की इन द वर्ल्ड. ऑफिसर्स चॉइस. यस. मतलब एंड अगर कोई ये बोलेगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं. पीपल विल बी एक्सपेक्टिंग कि ब्लैक लेबल होगी, जॉनी वॉकर होगी, डेली वाली जो होती है ना, डेली वाली जो है ना, वो ऑफिसर चॉइस. और वो कहाँ की है? इंडियन ब्रांड है. तो लाइक ब्रांड्स लाइक दीज
like But why do you think whiskey? मतलब one of the reasons that I read in the article is because एक तो बाप बेटे का साथ बैठ के पीना है, घर पे openly पीना for younger people is harder. That's what the article said. I don't think so. Nowadays it's very different. Yeah, but like, why do you think कि whiskey ऐसा क्या है? I think the biggest reason is कि the spending power in India comparatively. आज for example, you will buy this beer for $150. Like if let's say I'll take my home state, Chhattisgarh, 200 rupees की you will get a 650 ml bottle, a beer. And same if you buy a Royal Stag, which is a 47% alcohol, you'll get it for $300. Right. So more bang for the buck. And even now the inflation is on and पूरा कोविड का सिनेरियो सारी चीज़ें, उसके बाद तो people की लोगों की स्पेंडिंग पावर बहुत कम हो गई है. And they will like यार हम लोग को अल्कोहल क्या परसेंटेज जिसमें जल्दी बस मिल जाए हम वो पीना चाहेंगे. Yeah. And that is one of the biggest reasons in India. इसलिए and one example of this is बहुत दिनों से my friends and I were sampling संटोरी विस्की जो होती है. एक दिन मेरा दोस्त बोलता भाई मैं ना भंड होना चाहता हूँ. You know, like I want to actually get drunk because this is a good artisanal Japanese whiskey. Yes, definitely. Right? तो अच्छा लग रहा है पी के, but like it doesn't give me like oh I am actually drinking whiskey वाली feel. तो he's like कि अब हम black label पियेंगे. It's like great, ठीक है. But it serves to prove कि अगर आप कम पैसे spend कर रहे हो, Indian like Shnir Grover said कि आपको या तो फ्री चाहिए या फ्री में सबसे ज़्यादा चीज़ चाहिए इंडिया के अंदर. मतलब I think our alcohol industry is full of that. That's what I feel. Like, even if you see a lot of brands, there are a lot of brands which are running 2+1 all the time. 2+1 scheme, like buy 2 and get 1 free or 1+1 schemes. A lot of brands have been made like that in India nowadays. And उस चक्कर में still there are a lot of companies who are still making losses because of that. And because एक बार इंडिया में जो स्कीम चल गई ना, एक बार आपने कंज्यूमर को वो स्कीम दे दी, तो उसके बाद वो आपकी बियर तभी पेगा कि अगर आप उस रेट पे दे रहे हो. अगर आप उसको वापस कोशिश करोगे कि रिवाइव हो जाए कि अब मैं हटा देता हूँ, अब तो मेरा चल गया है ब्रांड. अब फॉर एग्जांपल मैं आज आई गो टू अ बार एंड आई गिव हिम दिस मच स्कीम कि यार मैं ये स्कीम दे रहा हूँ आपको फॉर एग्जांपल, या मैं आपको ये देता हूँ, आप कंज्यूमर को पास ऑन करो, तो वो करेगा पास ऑन. या वो फॉर एग्जांपल मैंने बोला यार मैं आपको 3+1 स्कीम देता हूँ, आप उसको आगे 1+1 कर दो या 2+1 कर दो और बाकी का आप अपने पास रख लो. तो चला दिया आगे एंड 1 महीना चला, 2 महीना चला, 3 महीना चला. दैट इज़ अ लॉस मेकिंग थिंग. राइट. 2+1 स्कीम में कहाँ से कमा सकते हो आप पैसा. एंड बाद में जब आप वापस जाते हो 3 महीने बाद रिन्यू करने के लिए, बोलते हैं यार अब तो मैं नहीं दूंगा इतना, एक बार दे दिया, तो बार वाला बोलेगा तू नहीं देगा ना, तो मेरे पास 3 और ब्रांड हैं तेरे जैसे. राइट. जो देने के लिए रेडी हैं. फर्स्टली पहले मार्केट ख़राब हो गया, उसके बाद आपने ये सिचुएशन क्रिएट कर दी कि अब बाकी जो वो हैं उनको मालूम है कि व्हाट इज़ द वे आउट, कि उसको कैसे करना है. कंपीटिंग ब्रांड के पास जा सकते हैं आप कभी डायरेक्टली. मतलब फॉर अस लाइक इवन विद अस सिम्बा वी हैव नेवर डन 2+1 1+ इन आवर 6 years. कभी भी नहीं किया एक बार भी. बिकॉज लाइक वी हैव बिन यू नो लाइक इन अ एथिक्स ऑल्सो फॉर अ ब्रांड इन अ बिजनेस कि हम लोग को वी हैव टू गो स्लो. वी कांट गो कि यार हमको बार बार एक ही चीज़ मतलब कि 2+1 1+1 करके ये ब्रांड चलाना है. यू बिकम अ स्कीम ब्रांड एंड वी हैव सीन अ लॉट ऑफ स्कीम ब्रांड्स यू नो गोइंग डाउन लाइक दिस. वी डोंट वांट टू बी लाइक दैट. सो व्हाट इज, क्योंकि आप स्कीम ब्रांड के करने के चक्कर में यू बेसिकली मेक अ लॉट ऑफ सेल्स इन द शॉर्ट टर्म, बट लॉन्ग टर्म के अंदर आपके प्रॉफिट्स नहीं होते, आपके रेवेन्यूज. यू मतलब अब बहुत सारे एल्कोबेव मार्केट्स हैं, एल्कोबेव कंपनीज है जो आज की डेट में नहीं कर पा रही हैं ये चीज़. दे आर मेकिंग लॉसेज बिकॉज दे स्टार्टेड लाइक दैट. एंड आज की डेट में आप जितने लोगों से भी बात करोगे एल्कोबेव इंडस्ट्री में, जितने ही बड़े ब्रांड्स बने आज की डेट में लाइक टिक पर्नो और एनी वन हु हैज़ डन दैट, उन लोगों दे हैव नेवर गॉन इनटू दैट स्कीम. मतलब उन लोग इतने बड़े बन गए कि उन लोगों को अब देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो स्कीम हो गई. मतलब दैट इज़ लाइक कि आप दे देते हैं यार बिकॉज लेट्स मेक देम हैप्पी. बट उनका ये सिनेरियो कभी भी नहीं होगा कि मतलब इफ़ दे वांट टू डू मोर सेल्स और अपना टॉप लाइन बढ़ाना है, तो इसलिए what is top line? So basically for investors, if you want to showcase that we have done so much sales and everything, so you try to give out more schemes and everything for people, for consumers, that people buy it. आपका turnover बढ़ रहा है. अच्छा, correct. But आपकी profit कम हो रहा है. But the profit has not been there, right? So उसके मतलब that is how Indian businessmen are working right now. कि मतलब वो पूरा investors वाला game सारी चीज़ें चल रही हैं. So this is a product that is mass made, right? Mass produced and then sold to all across India. ठेकों में जाता है. Yeah. Everywhere. I think we are right now in 17 states. Yeah. The reason I brought that up is because क्या बियर ब्रांड्स या लिकर ब्रांड्स अकाउंट करते हैं बोतलें टूटने के लिए ट्रांजिट के अंदर, या वो अकाउंट करते हैं कि जब ठेके पे आ गई बाई चांस इनसे वो हो गया, एंड डज दैट ईट अवे अ लॉट ऑफ द रेवेन्यू
It depends कि like firstly who you are tying up with. पहली बात, for example, every state again has a different thing. Right. Like if you are in Chhattisgarh, for example, or if you are in Karnataka, so वहाँ पे government warehouses है. So once you supply to the warehouses, उनके बाद उनकी जिम्मेदारी है माल देना. अगर किसी रिटेलर ने ऑर्डर प्लेस किया, उसके बाद उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो ट्रांजिट में अगर टूटा तो वो गवर्नमेंट पे आता है. And do they actually pay then? Yeah, they have to pay to the retailer. Okay. We because हम लोग को हमारी पेमेंट मिल जाती है जैसे हमने सप्लाई किया. Correct. Right. और हर स्टेट का अलग है. कई जगह हमको पैसा मिलता है आफ्टर वी make the sale. No, after we make the sale in the retail. Okay. It depends on the if it's a government shop, the government की सेल जब हो जाती है उसके बाद हमको पैसा मिलता है. तो ये मतलब what is the revenue model for this then? कि मतलब ये this is हर स्टेट के हिसाब से different है तो like it's very that is like I think हम लोग जनवरी से लेके अप्रैल तक सिर्फ एक ही काम करते हैं. एक तो सीजन थोड़ा सा माइक सॉरी तो एक तो सीजन की तैयारी लाइक बिकॉज अप्रैल मई जून जुलाई इज लाइक 40% हमारी सेल जो इंडिया की आती है मतलब साल की आती है वो उधर से ही आती है गर्मियों के टाइम में. तो उस समय हम लोग का ये कोशिश रहता है कि हम लोग पहले तो रजिस्ट्रेशन करने पड़ते हैं हर स्टेट के. एवरी ईयर देयर इज अ न्यू रजिस्ट्रेशन. फॉर व्हाट? फॉर एक्साइज. ओके. सो एवरी ईयर एवरी स्टेट हैज़ अ न्यू पॉलिसी या कुछ ना कुछ एंड वी हैव टू रजिस्टर इट अगेन. तो उसके लिए वी हैव अ टीम 4 लोग की हु डज दैट पूरा टाइम. उनका काम ही यही है कि एवरी लॉ इज़ फॉलोड, एवरीथिंग इज़ फॉलोड, लेबल्स रजिस्टर, लेबल रिन्यू हो रहे हैं बार बार. तो फॉर एग्जांपल फॉर सेल इन हरियाणा है, अब उन्होंने फॉर एग्जांपल हरियाणा बोल देगी कि अब नीचे आपको इस लैंग्वेज में भी लिखना है तो वो फिर रिन्यू होगा, फिर लेबल होगा, फिर उसकी फीस लगेगी. एंड वी हैव 4 ब्रांड्स के डिफरेंट SKUs एंड एवरीथिंग. तो हर चीज़ बार बार एवरी ईयर वी हैव टू डू दैट. So does it get tough to sell alcohol in India then? Is it a tough business to be in? It is a very tough business to be in. But I think now like states like Maharashtra and Karnataka अब ये धीरे धीरे इस चीज़ को अडॉप्ट करने लगे हैं. मतलब डिफरेंट इवन फॉर एग्जाम्पल मूनशाइन मेड्री आपने यू माइट हैव हर्ड ऑफ द नेम दिस बेवरेज कंपनी अगेन. सो दे मतलब उन्होंने आई थिंक दे वर्कड रियली हार्ड इन महाराष्ट्र टू मेक द एक्साइज पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ मेड. Even a lot of people मीठी बियर होती है मेड. Yeah, no, I won't say मीठी बियर होगी, but yeah, it is made with different stuff and everything. Right. We still try to figure out what it is, right? Because we have never focused. It is a very niche product. But people who understand it, like they will know what it is. तो like even महाराष्ट्र कर्नाटका थोड़ा सा मॉडर्न है इन सब चीज़ों में. And I think now they've because of Mumbai and Bangalore, right? Primarily. Yeah. And Bangalore तो like is the beer hub. तो वहाँ पे तो मतलब जितना एक्साइज बियर मार्केट की बियर इंडस्ट्री वालों की सुनता है वो किसी की नहीं सुनते. So these guys understand what it is and वो slowly अब दूसरे स्टेट भी अडॉप्ट कर रहे हैं उस चीज़ को. बिकॉज क्या हम लोग को जाके दिखानी पड़ती है सर वहाँ इतनी अच्छी पॉलिसी आ गई है सर, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ पे अब इसको ऐसे लागू करना चाहिए. एंड एक्साइज पॉलिसीज आर मोर इन फेवर ऑफ विस्की मार्केट्स बिकॉज की सेल ज़्यादा है, उससे रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होता है. So it's easier to be a whiskey brand than a beer brand. Right, like comparatively. But a whiskey brand also struggles a lot because of the renewals and everything every year. So why did you start selling beer? मतलब ये क्यों start करा Simba? Could have been doing something else. So we have like my family have been in this business for the last 75 years. Not beer, but like in the distributionship of beer. My Dadaji when he came from Pakistan. So he got a shop and everything, and he used to sell in the same bicycle. He used to sell alcohol in that. On a bicycle? Yeah. That's crazy. उस समय वैसे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे कि मतलब you can just go and buy it and the wholesale and then you can just sell it. तो क्योंकि nationwide policy नहीं होती होगी ना कुछ. Yeah. तो 25 years, for good 10-15 years he did that. And after that he bought shops. And then for few years he did shops, and after that we got distributionship. A good 40-50 years. तो हम लोग पूरे डिस्ट्रीब्यूशनशिप में थे. तो वी यूज्ड टू डू इट फॉर अदर ब्रांड्स. आई थिंक मी एंड प्रप्तेज इज नॉट हियर दो, बट वी थॉट ऑफ दिस व्हेन आई थिंक 2014-15 में वी वर इन UK and we have this name registered, Simba. My dad registered this name I think 10 years back, and he's like, yeah, it's a very good name for an alcohol brand की whiskey या कभी कुछ करेंगे आगे तो. And at that time, my bade papa and my father and my chachu, these guys planned to open a brewery, and they were like, we'll brew it for other people, contract manufacturing, and then slowly आगे जाके जो भी concept होता है फिर आगे जाके देखेंगे कैसा चलेगा. And Praptej came back I think in 2014
to India. Like we both studied in UK. तो उस समय Prapte had this idea that we should definitely get into this craft segment because me and him saw the thing कि यार UK में ना बहुत ज़्यादा craft beers का market grow कर रहे हैं and slowly it will come down to India as well. Right. Beers like Cobra basically in India वहाँ पे and Camden वहाँ पे उस समय बहुत चल रही थी तो and then slowly Praptesh was like we have to start this and I think for the next good 2 years he spent a lot of time in the brewery and we were making beer for AB and Bev at that time like Foster's and all these brands. Foster's खत्म हो गया ना इंडिया के अंदर? हाँ इंडिया में अभी नहीं है but मतलब they supplied from outside but now a lot of brands are coming back. Because I remember seeing India के अंदर Foster's के ads आते थे बहुत बड़े ये Australian beer है बहुत ही अच्छी and used to be like a staple at parties. To be honest, it is one of the best beer brands. Yeah. And I think now क्या हुआ है कि अब AB and Bev and Sab Miller tied up like okay so merger हो गया उनका basically तो basically number 1 company beer brand दुनिया की है number 2 merged. Oh crazy. And they basically own 75% of the beer market of the world. Damn. So imagine Hayward, Corona, Hoegaarden, Budweiser all under same banner. So it doesn't matter profit because आप अगर पी रहे हो Budweiser आपको नहीं पता होगा कि Hoegaarden और ये same brand है. हाँ. So like all these brands were taken over like हर country से taken over and now like it's all a merger. So I think it was like a huge merger and at the same time वो ना 2-3 साल उनको लगा मतलब merger में जो policies होंगी सारी चीज़ होंगी at that time our Praptej's idea to be honest Praptej's idea was कि हम 2 साल ना पहले समझेंगे कि ये सब होता कैसे है the whole process. We were good in distributionship, we had that connects and everything but हमको था कि हम लोग को if you want to reduce our own brand हम लोग को पहले समझना पड़ेगा how is this process like. So we come from a like a distributionship background but not from a brewing background. So Praptej actually worked really hard on that for the 2 years. And then I was coming back to UK in 2006 from UK on 2016. उस समय Praptej was like it is the right time. I think you should come back. We should start this now. This is the right time to go. And I was like definitely. So he's like I think Neelu Papa's name. मतलब my father is called Neelu Papa. So he was like his name we'll use it that Simba. And I think that will actually help. And that was the time Bira was also coming up the same time. So we started it I think in 2016. So we started supplying it in our neighboring states first. Firstly we did it for 1 year we did it in Chhattisgarh and we got a good response. So our policy has been like in the company कि हम लोग पहले ना अपना base strong कर लेते हैं. हम लोगों ने tier 1 में घुसना ही नहीं था पहले. Tier 2 cities के अंदर Tier 3 पहले हम लोग 1-2 Tier 2 cities ले आते हैं जहाँ volume मिल जाए हमको. देखो हमारे पास क्या हमारा घर का पैसा है. मतलब हमारे लिए एक पैसा जा रहा है तो वो बाकी ब्रांड्स के पास ये है कि मतलब दे हैव इन्वेस्टर्स मनी VC फंडिंग है हाँ उसके साथ करें तो हम लोग को दर्द है उस पैसे का कि जब पैसा जा रहा है ना हमको दर्द आता है तो एंड ऑब्वियसली यू हैव टू प्रूव इट टू योर फैमिली एज वेल राइट तो आई थिंक वी डिड गुड सेल्स इन छत्तीसगढ़ एट दैट टाइम एंड देन वी स्लोली एक्सपैंडेड टू नॉर्थ ईस्ट विथ क्या बोलते हैं असम एंड अरुणाचल एंड नाउ वी आर इन all the states which supplies alcohol वहाँ पे मेघालय as well and Tripura. तो उसके बाद we got a good response and then we were like कि अब we have to do something about it like we have to go national right because we are getting a good response we have something very catchy and it will go on and Simba everyone relates to Simba somehow or the other and or someone or the other like will aspire to be like Simba because Simba defines a lion and it's the whole story. Lion King wali हाँ. Yeah. Although there's a monkey here, no? No, it's a lion. It's a lion? Yeah, it's a lion. Yeah. Anyway. People get confused thoda. Yeah. And also because Bira and Simba started at the same time, so there was a lot of confusion at that time. Yeah, I was going to say कि the bottles, मतलब that you guys would get confused all the time. The bottles look eerily similar, colors भी same होते हैं तो सीन नहीं होता कि मतलब यार see depends like for example if you see their products मतलब उनके it's very like the colors are very different like our lager and their lager's colors is very similar only that I think other than that every other color is very different like wheat and stout so stout we were the first ones to get stout in the country we get a lot of complaints though that we don't supply stout properly यहाँ पे तो we still face that problem but we are because stout का जो production होता है it's a very small batch right and we cannot supply it everywhere and anywhere because people still don't understand stout I'll tell you there's this government market
I won't say, but वहाँ पे so a guy who orders alcohol is an excise officer, and he is like 60 years old, and from some Naxali belt or something like that, and he wanted to order Simba lager, and he didn't find it online by mistake, and so he ordered Simba stout in a Naxali belt, and then we get a call from him, यार तुम्हारी बियर काली हो गई है. You get it? And it is so difficult for us to make him understand that it is not going black or something. It is like that. So sometimes there are things which are very difficult to make people understand. But to answer your question, कि अगर आप like comparing Bira with us, like we have a very different style of beers, to be honest. Like we make like wheat, but their strategy and our strategy is very different comparatively. Our strategy is firstly that we don't want to put a lot of stock in the market because definitely it's going to get expired. अगर आप बार बार माल डालोगे ना तो एक्सपायरी के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा रहते हैं. एंड वंस द बियर गेट एक्सपायर्ड ना यू कैन नॉट गेन दैट कॉन्फिडेंस अगेन विद द रिटेलर. या रेफ्रिजरेशन मस्ट बी अ रियल बिग इशू, राइट? स्पेशली गर्मियों के अंदर, क्योंकि मतलब हर किसी के पास अच्छा फ्रिज तो कहाँ ही होता होगा, और फिर जब ट्रक्स वगैरह में भी जाती है, व्हाट अबाउट देन? सो आई थिंक लाइक यहाँ पे कंपेरेटिवली इन अ लॉट ऑफ स्टेट्स एग्जॉस्ट सिस्टम बहुत ख़राब है. Exhaust system in the warehouses is very bad. Warehouses में has to have exhaust system. Right. One of the reasons why you will get Corona, you will get flat is because वहाँ पे exhaust system नहीं होता है and there is direct sunlight to the bottle. Yeah, but they want that. That's the kind of beer that they sell. No. They want the transparent bottle. They made it for the international group, but in India में भी उनको वही करना पड़ेगा अगर बाहर भी यही कर रहे हैं तो. पर अगर उनकी beer direct sunlight में hit करती है तो it goes flat. तो वो जब फ्लैट चले जाती है तो फिर आप कभी भी देखोगे ना कोरोना पहले अभी तो नहीं बहुत, या तो कभी एक्सपायरी मिलेगी आपको, या तो ये होता था कि फ्लैट हो जाती थी बियर. वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है कि आप ट्रांसपेरेंट बॉटल है. तभी उसमें लेमन डालते हैं? नहीं दैट इज नॉट. नहीं, लेमन की कुछ बारटेंडर ने बताया था इसमें लेमन डालते हैं. नहीं, लेमन की स्टोरी कुछ और है. क्या स्टोरी? पहले मेक्सिको में 2-3 स्टोरीज है. मेक्सिको में पहले बताया था कि वहाँ पे जहाँ वो लोग बार्स में ना बहुत ज़्यादा बीज यूज्ड टू बी अराउंड एट दैट टाइम. And insects used to be around. So at that time they used to put lemon around the tip of the so that it doesn't stick. Well, the वो ना आए मक्खियाँ और वो ना आए. So because of that it happened. That's what I have heard. मतलब there are 2-3 stories and कई लोग बोलते then they made the whole PR thing कि उसको उसमें डाल दिया, क्या बोलते हैं, आपको lemon डाल दो and then it tastes very different. But I don't understand that, but I'm not sure how it happened. But मैंने जो story सुनी है वो यही है. Right. Yeah. Listen to this. When you first wake up in the morning, before you get dressed, wipe your bare testicles with a clean linen handkerchief. Fold the handkerchief neatly and wear it as a pocket square in your jacket all day. The book promised that women would find the smell irresistible. Whether or not it worked, the advice made pocket handkerchiefs hugely popular. This is one of the several insights in my brand new newsletter. अभी फिलहाल के लिए इसको Vinamre's newsletter बोलेंगे. That I sent out twice a month. It is now available. मैं जो भी बढ़िया से बढ़िया किताबें पढ़ रहा हूँ, all the books that I'm reading, my top insight from that. It's a very small newsletter. It'll get delivered to your inbox so that you can get piqued कि यार ये किताब कितनी फाड़ है, should I read it? And just like give you like the best curation of what I think is most interesting from these books. ठीक है? उसके लिए साइन अप करना है सिर्फ अपना ईमेल एड्रेस यूज करके. लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है. दिस इज गोना बी द बेस्ट न्यूज़लेटर यू एवर डिस्कवर्ड. आई जेन्युइनली बिलीव इट. ओवर 1700 पीपल हैव ऑलरेडी साइंड अप. वेट मत करिए. दिस इज द टॉप टियर शिट, टॉप शेल्फ ओजी माल है ये वाला. इफ यू एवर फॉलोड माई प्रीवियस चैनल शातिर, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. दिस इज दैट गुड शिट. दिस इज द शिट दैट विल नॉक ऑफ योर पैंट्स. इट्स हाई क्वालिटी राइटिंग क्यूरेटेड स्पेशली फॉर यू गाइज. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. साइन अप करना ना भूलें. When it comes to other brands, मतलब I'm just wondering कि अल्कोबेव वाले सारे कॉन्फ्रेंस करके बैठते हैं, बोलते हैं यार क्या चल रहा है, क्या सीन है, मतलब how competitive does it get? Does it get very competitive? It's very competitive. Yeah, it's very competitive comparatively, especially in the homegrown brands. But at the same time, there has to be competition if this industry has to grow. Specifically, the beer. अगर आप जिन ब्रांड देखोगे अभी बहुत कम जिन ब्रांड्स है कंपेरेटिवली. होमग्रोन ब्रांड्स, हाँ होमग्रोन तो बहुत आ गए हैं. अब आ गए हैं बट मतलब अभी उसमें 1-2 ही चल रहे हैं. मतलब बहुत चल कितने रहे हैं मास मार्केट में तो. या बट मोस्टली ग्रेटर दैन एंड ग्रेटर दैन वो जो होमग्रोन ब्रांड्स है वही तो हैं. फॉर एग्जांपल आज
होमग्रोन एंड ग्रेटर दैन हो गया, हापुसा हो गया, दिस स्ट्रेंजर इन सन्स, या ये चल रहे हैं एंड लाइक गॉर्डन वार्डन चल रहे हैं, बट अभी ज़्यादा नाम ग्रेटर दैन और इनका है कंपेरेटिवली. बट अगर आप also difficult to drink, it's a pretty strong gin. या बट अब वही है ना, एवरीथिंग इज रिलेटेड, लाइक इट्स अ स्टेज ऑफ द थिंग कि अभी उस जो कंपनीज राइट नाउ दे आर कूल राइट नाउ, दे आर एक्चुअली केटरिंग द यूथ. Right. And they're actually at a very good price point comparatively if you see to other brands. And no one wants to drink वो अपने फादर की ड्रिंक, to be honest. Everyone is like कि हमको हमारी यूथ वाली ड्रिंक चाहिए. कोई भी सेगमेंट हो, आप बियर ले लो, विस्की ले लो, वो ले लो, everyone wants to have their own. हम लोग अभी जापानीज़ के बातें करते रहते हैं, जापानीज़ विस्की चाहिए हमको, ये चाहिए अभी क्योंकि वो ट्रेंड चल रहा है. आगे जाके जो हम लोग के आगे फ्यूचर होगा जनरेशन, उसमें ये रहेगा कि यार जापानीज़ क्या है, ये नहीं, दे विल हैव समथिंग और द अदर. Right. तो फॉर अस ऑल्सो लाइक कंपेटिटिव, अब जो बात कर रहे हो उसमें अ लॉट ऑफ पीपल इन आर इंडस्ट्री इज़ लाइक कि एवरी वन वॉन्ट्स टू ग्रो टुगेदर, बिकॉज यहाँ पे अभी जितने ब्रांड्स आएंगे, अभी जितनी कंपनीज आएंगी, उतना कैपिटल इन्वेस्ट होगा बियर इंडस्ट्री में. जितना कैपिटल इन्वेस्ट होता है उतना एट द एंड ना सैम्पलिंग ज़्यादा होगी. एवरीथिंग इज रिलेटेड टू दैट. एंड व्हेन द सैम्पलिंग हैपन्स ना, उसमें फिर ये हो जाएगा यार, फिर द कंज्यूमर्स डिसाइड कि क्या अच्छा है क्या नहीं. बट सैम्पलिंग तो सैम्पलिंग इज द टफेस्ट पार्ट. I remember you were talking to Anish also regarding the sampling thing. Right. Even our events and everything, it's not कि यार हम बेच कितनी रहे हैं वहाँ पे. It's about sampling हो जाए, किसी के मुंह लग जाए, उसके बाद तो हमको अपनी क्वालिटी का पता है right, कि लोगों को पसंद आएगी. Like we don't have a stout in every market right now because हर जगह ना हर कोई they don't understand it. Right. बट जहाँ पे हमने एक बार दे के हट गए ना पीछे, नाउ दे लाइक यार हमको चाहिए, दे आर आस्किंग फॉर इट. लाइक यार DMs एंड एवरीथिंग इज ऑल अबाउट कि यार आपने स्टाउट नहीं दी. एंड टू बी ऑनेस्ट हमारी जो पूरी मार्केट जो हम लोग जितना बेचते हैं, इसमें 1% स्टाउट, एंड बट सबसे ज़्यादा हाइप स्टाउट की है. बिकॉज पीपल, मतलब आप Tier 1 मार्केट में जाओगे तो पीपल विल नॉट टॉक अबाउट हेवर्ट 5000 और किंगफिशर स्ट्रॉन्ग. पीपल विल टॉक अबाउट बडवाइजर, हो गार्डन, ऑल दीज ब्रांड्स, राइट. तो वो चीज़ परसेप्शन बिल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है कि पीपल लोग कि आप क्या क्वालिटी की बियर बना रहे हो, क्या बना रहे हो. So that is very important. Have you seen the hard seltzer market in India? कुछ है उसका scope? So I think we really thought about it in the COVID. In that I sense. only know one brand, Pursue. मैंने एक बार Yeah, they just started. Yeah. Just started. Saw them in few events. Like, so I think there is a market again, but it will take time. It's very small. मेरे को I was drinking it, I had to explain to people कि भाई ये क्या है. And even I was like, भाई White Claw पता है? White Claw. अब अगर हर किसी को White Claw I think US में तो White Claw has created like they've got all college students drink White Claw. So you stayed from US, right? Yes. Yeah. Where? तो वहाँ पे predominantly trend ऐसे shift हुआ. It would be Bud Light. Okay. Yeah. Bud Light is the fraternity cheap beer, right? जिसके अंदर क्या 19% alcohol होता है. Yeah. And they like to जो छोटे-छोटे can होते हैं. It's not like the bigger cans that we have in India. There's like smaller cans, right? 330 ml. Yeah. उसको लेके फिर they crush it and they throw it, right? That's the thing. And the backyard thing. Yeah, the backyard thing. It's like how many can you drink? Yeah. And then I think कुछ health movement आया या क्या हुआ? Yeah, the health movement basically. They shifted to White Claw. And मैं देख रहा हूँ left and right. मैं एक fraternity का हिस्सा था. मैंने वो start करी थी. So I saw कि a lot of the people in my fraternity were drinking White Claw. क्योंकि एक तो cleaner higher है. I don't know what it is. It's basically soda with alcohol. That's it. अच्छा. Yeah, that is it. Soda with like just alcohol. The spirit. Yeah, spirit, alcohol. Okay. So how is that different from a whiskey soda then? वो भी तो like the flavors, the sweetness, the sweeteners are not there and everything. मतलब very minimal. If you see, it always says White Claw says 90 calories and everything, right? Right. Yeah, so that is it. Because when you don't put rice and all these things, the calories cut down, right? The sweeteners and the malt and everything. So that is there. But I think White Claw has done a great job in US. I think they've cut down 30-35% of the market for craft beers. What do you think is going to be the emerging alcoholic beverage in India? मतलब beyond these, it's like something that you're betting on personally, beyond beer. I think beer is growing, to be honest, but at the same time I feel the higher alcohol percentage products will have a higher chance. But like we've done a lot of research. Like there's another thing called Vodkilla. Yeah, Vodkilla. Which is selling a lot in Australia nowadays. Achha. So it's a mix of vodka and tequila. Yes, there is this thing, and it's booming also in Australia, but not that much. But abhi chal raha hai, kafi it's emerging.
But when we research about businesses, तो we research about other products as well. So you were seeing that. तो वो एक चीज़ थी. तो we were like कि ये फिर भी हो सकता है for the Indian market because again a high alcohol percentage, but at the same time you can't place it on the tier 1 markets because tequila in itself has a very bad perception, right? Right. बहुत बुरी perception है tequila की. मतलब वैसे tequila अगर आप देखोगे तो is a very good thing to have with other right. It's a good cocktail spirit that you can. But अगर आप वैसे सोचोगे ना तो आप अगर इंडिया में सक्सेसफुल होना है if tier 2 tier 3 मार्केट्स में आपको वॉल्यूम नहीं है तो you can't be. तो सेम फॉर टकीला एंड ऑल दीज ब्रांड्स आप नॉर्मली टकीला ब्रांड्स नहीं देखोगे इंडिया में इतने फेमस. मेस्काल वगैरह आते हैं थोड़े बहुत. या वैसे आते हैं इंटरनेशनल ब्रांड्स आते हैं. पेट्रोन आते हैं. नहीं इंटरनेशनल ब्रांड्स आएंगे. इंडियन ब्रांड्स आप नहीं देख पाओगे. बहुत मार्केट ही नहीं है. मार्केट घोष की भी कितनी मेहनत है. आप सोचो ना कि आप वॉल्यूम कैसे क्रिएट करोगे टियर 2 में. आज टियर 2 में मैं किसी जाके टियर 3 मार्केट में किसी से पूछूंगा ना भाई टकीला शॉट्स लोगे. हाँ टकीला नहीं टकीला कौन सी आपके पास कोई टकीला कौन सी नहीं पता. टकीला शॉट्स बोलते हैं सीधा. हाँ तो वो चीज़ नहीं है. तो उसके लिए बहुत heavy binge drinking के साथ associated है. Tequila shots like vodka shots is a lighter version. But it's still for like younger people. I think as you grow older because what if we notice like कौन से एज ग्रुप्स like obvious सी बात है कि जहाँ पे लीगल एज है वहाँ तो मतलब वो तो एज ग्रुप बोलेगा भाई अब हमारा टाइम आ गया अब हम पियेंगे राइट. वो तो है ही. उसके beyond have you seen like older consumers drinking beers and if yes like what are their have you noticed something unique about them? So the older generation who drinks beer they will consume lagers more than any other beers. Which is what I'm having, right? Yeah, because but one of the biggest reasons कि Indian consumers are like उनकी हिस्ट्री है कि वो विस्की पीते हुए हैं, right? And whiskey has a bitter taste, right? तो lagers are mostly bitter. It's because of the taste. Yeah, it's because of the bitterness. Lagers आप कभी देखो आज भी प्रीमियम सेगमेंट में 80% कंजम्पशन जो है वो लागर का है. प्रीमियम सेगमेंट में 95%, 90%, 93% तो आज भी स्ट्रॉन्ग बियर ही बिकती है इंडिया में. राइट. मतलब 7% हम तो अभी भी 7% में ही खेल रहे हैं. 7-8% में. ऑल्दो हमारे वॉल्यूम्स हमारे जो हैं स्ट्रॉन्ग बेस फॉर हमारे टियर 2 और टियर 3 मार्केट से आते हैं. मैं उसको काउंट नहीं कर रहा हूँ. बट टियर 1 मार्केट्स वो 7% ही है. वो जो 7% है उसमें 50% आपका लागर बिकती है बिकॉज इट इज़ बिटर. राइट. आप क्या होता है कई बार क्या होता है लॉट ऑफ पीपल लाइक वीट is because a lot of girls like wheat beer because it's a bit sweeter on a bit sweeter side. तो उस चक्कर में wheat का ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा आया comparatively. तो lagers is something which like from the age group 35 से 45 में lagers ज़्यादा consumption होती है any day. What about the fact कि जो ये the beers that you sell at events वहाँ पे like when it comes to advertising right? Is it you have seen कि क्या होता है typically since it's you can't advertise on TV you know you can't advertise tobacco or alcohol on TV. You have to use events and online चीज़ें. तो ये how many things you have to bypass to get to advertise something like beer? See like again you have to create surrogate brands, right? Surrogate brands like for example like how Hayward soda or something like that. They create and they start selling water and everything or the soda and everything market में. That's how they used to do it back then, right? तो अभी because digitally a lot of restrictions are not there अभी. But I've heard कि अभी हफ्ते भर पहले like sitting with my legal team as well कि a lot of laws have come down अभी इसको लेके और even digitally कि आपको पहले तो एज ग्रुप का था कि आपको 25 and above है अक्रॉस इंडिया इन सोशल मीडिया इंस्टाग्राम एंड एवरीथिंग. अब ये भी हो गया है कि अगर आपको if you want to even send something to a renowned guy or something and if he like influencer posting or whatever happens so the bottle cannot be seen, the alcohol. So a lot of things are changing in India right now, but at the same time there are a lot of other ways people are creating different entities to promote their product like different account different companies and so वैसे हो रहा है but still very difficult. मतलब you will have to create a different business altogether. For example, even Bacardi, if you say Bacardi ka, they have CDs and now like NH7 Weekender. Yes. So it is one of the biggest. IPs बनानी पड़ती है. Yeah, IPs बनानी पड़ती है, and even we are doing that now, so I can't complain. मतलब फिर भी look, it says in the back, alcohol is injurious to health. This is a statutory warning that you have to put on, right? Yeah. Is it difficult? Do you ever get like मैसेजेस कि यार आप दारू का धंधा छोड़ दो ये जैसे क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर जैसे मैं फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज इन लंदन लोग हाइड पार्क में पिकनिक करते हुए बियर पी रहे थे. ठीक है. ओपन कैरी सी जैसे ओपन कैरी सीन होता है ना कि आप कहीं पे भी पी सकते हो ओपन कंटेनर नो प्रॉब्लम.
यहाँ पे it's still a social evil for many reasons, right? But how difficult is it to manage those things, वो perception? And are you looking to actively convert more consumers to alcohol? Like, how does it work out? So it's not like we're trying to, convert someone, but at the same time, option रखने में कोई problem नहीं है. थोड़ा सा mic. Option रखने में कोई problem नहीं है. And at the same, what we feel is that if someone wants to drink, he will drink. One way or the other. So everything starts from the house. कि आपके like how your whole thing is with your family and everything. If they're liberal with their drinking, they stop you. Yeah, but if you really want your kid कि ना पिए, मतलब if you are very strict with them, वो भी पीता है छुप के पीता है या कैसे ना कैसे पीता है. It's better कि what मतलब I don't have a kid right now, but I would say कि as an experience कि यार my father is pretty chilled out, to be honest. So he understands that कि if he doesn't want me to go all out, everything, तो he is like कि चल ठीक है, try it out. ये ऐसा different है, something new or the other. That's how we started also. Like, and even my father and me, like हमारा bond भी वैसा ही है comparatively. दूसरे अगर पेरेंट्स की बात करें तो दैट इज़ वाई इवन लाइक हमारे साथ ये था कि हमारी तो फैमिली बिजनेस ही ये था अल्कोहल का. तो हमारे घर में तो कुछ बोल ही नहीं सकते कि यार ऑल्दो हमारे घर में नॉट एवरी वन ड्रिंक्स, राइट, नो वन ड्रिंक्स टू बी ऑनेस्ट. इट्स जस्ट मी एंड माई ब्रदर हु ड्रिंक्स, वो भी बिकॉज ऑफ द न्यू जनरेशन. सो या, बट एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि अब मैं जाता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ भी तो ही अच्छा ये इसी का है ना दारू का काम, तो थोड़ा सा वो तो रहता है, वो थोड़ा नेगेटिव परसेप्शन आता है कि आपके जैसे बोलते हैं इनके ठेके हैं, व्हिच इज लाइक इवन लाइक आपकी तो कंपनी है उनके केस बोलते हैं ये ठेके वाले हैं. सो फॉर अस लाइक हमारे लिए तो हमेशा से ये रहा है कि मतलब वी हैव बीन लिसनिंग टू दिस, बट एट द सेम टाइम ठीक है एट दिन आना उनको हमारे पास ही होता है कि यार भिजवा दो. कई फैमिलीज है जिनके फ्रेंड्स के पास जाता हूँ मैं, फ्रेंड्स की फैमिली का, तो लाइक यार घर पे नलका लगवा दे यार, एंड लाइक नलका लगवा दे, व्हाट डज दैट मीन? तो लाइक नहीं बस पाइप खिंचवा दे, मतलब मजाक में ही बोलते हैं, बट दे हैव दिस थिंग, मतलब दे वांट, एंड देयर फादर से दैट टू मी. तो आई एम लाइक चलो ठीक है, बट सम फैमिलीज दे लाइक इन हाँ ठीक है ओके, तो बाहर ही बाहर मिलते फिर हम लोग उनसे कर नहीं जाते. That's crazy. It's a weird life to live. But is it fun? Do you enjoy it? Yeah. I think it is one of the best things which can happen to us. I think हमारे लिए यही था कि like our family has achieved a lot of things before. So for us it like now what was the next step? So for us it was something to create a brand. Right. And a national brand. I think luckily which we have created now, but I think it will take another good I think 10-15 years to get something what we have in mind. तो क्या क्योंकि I saw that you did a campaign with both Prabdeep and Seedhe Maut. यार रैप के साथ बियर एसोसिएट हो रही है, ये तो मैंने देखा पहले कभी. I think was that a risk that you took? That was a risk, but at the same time it was not done before, as you said. So for me, I'm a big listener of hip hop music, grime. Yeah, so it has been like that कि यार मेरे को एसोसिएट तो करना है, बिकॉज एट द एंड क्या होता है, ब्रांड किस बारे में होता है कि व्हाट फाउंडर्स आर थिंकिंग, लाइक फॉर प्रपतेज एंड मी इट हैज़ ऑलवेज बीन अबाउट कि यार हम लोग हमारे व्हाट इज सिम्बा अबाउट, व्हाट सिम्बा इज ऑल अबाउट माई फैमिली एथिक्स एंड एवरीथिंग, लाइक हाउ हमारी पर्सनैलिटीज़ हैं, हमारी क्या है. एट द एंड क्या होता है कि आप कोई भी ब्रांड बना दो, मैस्कॉट कुछ भी कर देते हैं, लोग कुछ भी करते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर आपकी वो दिख नहीं रहा ना कि आपकी चलाते तो इंसान ही है, तो वो चीज़ बहुत स्ट्रिक्टली दिखनी चाहिए आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजीज में भी और आपकी मार्केटिंग में भी. दैट्स व्हाट वी फील. आप फॉर एग्जाम्पल विजय माल्या को देख लो, आई थिंक ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग गुरुज in the world. He embodied the Kingfisher lifestyle. मतलब आप उसको देखोगे मतलब larger than life, everything was larger than life. मतलब आप कोई भी चीज़ देख लो इंडिया में आज की डेट में, कोई भी ब्रांड देख लो, किंगफिशर से बड़ा ब्रांड परसेप्शन आज की डेट में किसी का नहीं होगा. Even now with all of that has happened, फर्क ही नहीं पड़ा और बड़ा ही है वो ब्रांड. Crazy. Yeah. So I think it is very necessary to have that personality in your brand, and I think hip hop had that thing for us. We also support deep house music and progressive techno, but at the same time hip hop was something which was very close to me particularly. And मेरा भाई बोलता है तू क्या कर रहा है, प्रपतेज was always like मतलब he doesn't listen to hip hop music though, but he's always a believer कि यार hip hop is gonna grow because he can see the numbers and everything. It's staggering bro. Like बहुत कोई बड़ी बात नहीं है if Bollywood soundtracks just have hip hop. Yeah, definitely man. I think it started from Gully Boy. And then whole Raftar MV thing happened, and then it boomed.
Yeah, and it's I been think booming. अभी एमी और कृष्णा का beef हो रहा है, on and off just. yeah, man. अभी तो मतलब the way these guys are, I think hip hop will take over everything. Yeah. I think there's this saying that hip hop rules the world. Yeah. And I think I truly believe that because the stories and the narrations, at the end क्या होता है, हर चीज़ ना एक स्टोरी के पीछे रहती है. And if आपकी स्टोरी लाइन बहुत स्ट्रॉग है ना, आपका बैकग्राउंड या स्टोरी लाइन बहुत स्ट्रॉग है ना, एवरीथिंग विल वर्क. अगर आपकी स्टोरी नहीं है ना, तो आप कोई भी चीज़ में यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पाती है. अगर आप ब्रांड ले लो, इवेंट्स ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, अनटिल यूनिफॉर्मिटी नहीं है किसी चीज़ में या फिर कोई एक स्टोरी लाइन नहीं है, तो वो चीज़ डजंट वर्क. मतलब हर चीज़ बिखरी हुई लगेगी आपको कंपेरेटिवली. इवन फॉर अस व्हेन वी डिड इट विद प्रदीप एंड सीधे मौत, great guys, love what they do, and I think abhi they dropped, I think, the album Nayab, yeah, crazy album, like the collaborations and everything, matlab I think. And Batti, the song Batti, crazy. I think Batti se zyada that song I felt the Rajdhani, it had layers, man. Matlab I was scared. मतलब when I was listening to Encore every day चिल्लाता है ना राजधानी भाई क्या हो गया ऐसे. But I think that I was बिल्कुल ना, और वो गाने को 2-3 बार सुनना पड़ेगा. If people really want to understand that ना, वो 2-3 बार सुनना पड़ेगा. Right. And I think that another song which was the father one, Anadi, yeah. Even that was hitting. और मेरे घर में ना यही बोलते हैं कि तू relate, मतलब एक तो समझ में आता, तू एकदम गरीब घर से आ रहा है, तेरी प्रॉब्लम्स है ये तू समझे, तो फिर हम लोग लगे चलो तू रिलेट कर पा रहा है. तू कैसे रिलेट कर पा रहा है इस चीज़ को, तू ठीक ठाक रहा है, तू मतलब ज़रूरी थोड़ी है कि आपको मतलब वो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए अप्रिशिएट करने के लिए. या फॉर अस मतलब देन दैट्स व्हाट आई टेल देम कि यार हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि मतलब आई कैन रिलेट टू या वो चीज़ होनी चाहिए. इट हैज़ टू बी लाइक कि मतलब यार कुछ इंस्पायरिंग है एट द एंड. So Pradeep and Seedhe Maut ka has been, I think these guys have been the pillars of Indian hip hop, and I feel that's why I've been listening to them when they started the whole Azadi and everyone, and Mo. So I think these guys are great, and abhi we are doing a hip hop festival basically with our IP. Crazy. It's about hip hop festival. It's a all street and hip hop festival. And we're dropping our merch as well. So मज़े तो उसमें ही है. थोड़ा street wear, थोड़ा hip hop, बस थोड़ा hype. Yeah. So we're doing, it's called Simba Uproar. Basically, it's our IP where we do events and everything. So we call it Uproar. So basically, which is our lifestyle, Simba's lifestyle. So you get your merch, you get all the crazy stuff, the adventurous things, and then like our cave cocktails and everything. So that is something which we are doing. इंडिया में bootlegging कितनी होती है? होती है, but after the government is taking over all the shops and everything, कम हो रही है. But होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती. Have you watched Boardwalk Empire? No, not really. It's a show where बूटलेगिंग का एरा आ गया 1920s के अंदर न्यू जर्सी में, और ये एक करप्ट मेयर होता है. इज़ लाइक कि अब मैं पैसे कमाऊंगा न्यू जर्सी में. तो इट टॉक्स अबाउट कि बूटलेगिंग के कुछ ऑफिसर्स होते हैं जो जाके उन्हें पकड़ते हैं, बट दे आर एबल टू मेक अ लॉट ऑफ मनी थ्रू दैट. ओके. आयरिश विस्की लेके आते हैं, कहीं कहीं से लेके आते हैं, शिप कराते हैं, बिकॉज यू नो इट्स नॉट बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री. बूटलेगर्स क्या कर सकते हैं? कैन दे कॉपी दिस फार्मूला? इफ दे कैन कॉपी द फार्मूला, दे कैन डेफिनेटली कॉपी द लेबल्स easily. अच्छा. It's not an issue. मतलब how will they, अगर किसी को bootleg करता है तो क्या मतलब do they have, मतलब how do they do it like? So basically bootleg करता है, for example, या तो ये होगा कि यार वो दुकान से खरीद रहा है. For example, a lot of people buy stuff from Haryana. And send it all across India because सबसे सस्ती दारू कहीं मिलती है तो हरियाणा में. सही में? That is true. सबसे सस्ती दारू अगर पूरे हिंदुस्तान में कहीं मिलती है. So फॉर एग्जाम्पल अगर छत्तीसगढ़ में और महाराष्ट्र में कहीं पे भी आप देखोगे तो वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ब्लैक लेबल्स फॉर $4,500 या $5,000. हमारे यहाँ 1600-1700 की आ जाती है. सो दैट इज़ इट. वहाँ से अब वो लोग वहाँ से भेज के भी महाराष्ट्र और इधर कमा लेंगे. तो दैट इज़ द थिंग. Crazy. So what are your plans for this? Where like are you raising funding for this? Are you gonna expand into other beverages? So we are working on it already, and I think we are in talks with a lot of people, but at the same time this is something we cannot talk about because we are legally binded in a lot of things. But for this we want to be one of the biggest brands in the country right now, and for us the next 5 years we only want to focus in India because India mein is a high potential right now, still only 20%. But at the same time India is ह्यूज. एंड अभी बाहर की कंट्रीज जाने से मतलब बेटर ये है कि यहाँ पे आने पहले कंट्री को प्रॉपरली केटर कर लो. एंड
24 states, अभी भी काफ़ी states बाकी हैं, and proper supplies बाकी है. तो अभी भी state wide supply. Yeah, state wide supply proper, and like because our aim is to firstly cater to our country and then to any other country. Yeah. Fantastic, bro. Well, it's been great having you on Dostcast. Thank you so much, man. And it was great. Where can people find you, follow you if they want to do that? Instagram, I think, and LinkedIn, I think, yeah. Yeah, Ishwaraj Singh, yeah. Ishwaraj B. Ishwaraj B. Yeah. Sweet. And they can follow Simba viewer. Thank you so much. So this was Ishwaraj Singh Bhatia on Dostcast, and we'll see you all next Tuesday and Friday. Don't forget to subscribe. Bye-bye. Thank you so much.